हे एवरीवन, आई नो योर एग्जाम्स आर कमिंग क्लोज। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ थ्योरी बेस्ड सेशंस किए हैं, हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी है, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट स्टूडेंट्स फेस इज रिलेटेड टू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो फॉर दैट पर्पस हम लोग आज थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम, देयर इज द लिंक इन डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। आप वहाँ पर जाके क्लिक करोगे तो टेलीग्राम ऐप खुलेगा एंड यू कैन जॉइन द ग्रुप देयर। यू कैन आस्क योर डाउट्स, यू कैन गेट नोट्स. Notes are also available on the link given in the description. You can also connect with me on Instagram. Let's begin by talking about the first couple of questions जो हमारे MCQs होने वाले हैं. The first question is MS Office is a what? So we know what operating softwares are. जैसे आपका Android system हो गया, आपका Microsoft Windows हो गया. What are utility programs जो आपके operating system के साथ में आते हैं, जैसे calculator हो गया, clock हो गया. What is a programming language? It's a very different thing जो आप पढ़ रहे हो, Python हो गया. But application softwares are softwares which are downloaded externally, जो आप अलग से download करते हो for your use. So Microsoft Office is an application software. What is the ASCII equivalent decimal number for Y? So we have to study ASCII codes. For that you need to remember two things. 65 से 90 क्या होता है, आपके स्मॉल लेटर्स होते हैं, एंड आई गेस 97 से लेके 122 ये आपके होते हैं कैपिटल. ऑलराइट, सो इट्स ऑपोजिट. कैपिटल ये होता है एंड स्मॉल इज फ्रॉम 97 टू 122. सो अगर आपने ये चार नंबर्स याद कर लिए, सो यू विल बी एबल टू कैलकुलेट कि कौन से अल्फ़ाबेट का जो ASCII कोड है वो क्या होने वाला है. सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो ASCII कोड है फॉर Y, दैट शुड बी 1 बिफोर Z, सो दैट इज 89. सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेक्साडेसिमल ऑफ 346 क्या होगा. जो 346 है दैट इज अ डेसिमल नंबर एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ हेक्साडेसिमल नंबर. सो लेट्स रिकॉल हेक्साडेसिमल क्या होता है. हेक्साडेसिमल में आपके 16 डिजिट्स होते हैं, बट आपको तो सिर्फ 0 to 9 डिजिट्स ही पता है. व्हाट आर द अदर डिजिट्स? दे आर फ्रॉम A to F. ठीक है, सो आप याद कर सकते हो कि इनमें से जो डिजिट्स हैं वो यूज होने वाले हैं. सो लेट्स राइट द नंबर 346. इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने जब बाइनरी नंबर्स निकाले थे तो वी यूज टू डिवाइड बाई 2, है ना. 2 से डिवाइड करते थे एंड देन वी यूज टू टेक आउट द रिमाइंडर आइदर 0 और 1, एंड फिर हम लोग इसको ऑपोजिट ऑर्डर में लिख के बाइनरी नंबर निकालते थे. सो फॉर बाइनरी वी यूज टू डिवाइड बाय 2. सो फॉर हेक्साडेसिमल नंबर्स वी नीड टू डिवाइड बाय 16, राइट. सो 16 2s are 32 and then 16 1s are, and our remainder should look like 10. Okay, so this is the first quotient and remainder. Again you can divide by 16. तो 16 से डिवाइड करके आपको मिलेगा 1 एंड देन आपको मिलेगा 5, राइट. सो दैट इज इट. आप एक और बार अगर डिवाइड भी करोगे तो आपको आएगा 0 एंड दिस शुड बी 1. सो ये आपको 3 डिजिट्स मिल गए हैं, 1 5 एंड 10. इस ऑर्डर में लिख देते हैं. सो 1 और 5 तो सेम ही रहेंगे, बट आपका जो 10 है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय A. सो 1 5 A वुड बी द राइट आंसर. रिमेंबर, आपको कहाँ पर डिवाइड करके आंसर निकालना है, कहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करके निकालना है आंसर. फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर्स फ्रॉम द फॉलोइंग. इनवैलिड आइडेंटिफायर्स मतलब आप कौन से नाम रख ही नहीं सकते हो. सो हम लोगों ने ये एग्जाम्पल भी देखा था, कौन से नाम नहीं रख सकते. जो रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं वो आप रख ही नहीं सकते हो, बिकॉज ट्रू हैज अ मीनिंग इन पाइथन. एंड आप जो डिजिट्स है, नंबर डिजिट से जो नाम स्टार्ट होते हैं वेरिएबल नहीं, वो भी नहीं रख सकते हो. सो इवन दिस इज रॉन्ग. सो C and B are the correct answers. Now we are talking about tuples. सो टपल्स और लिस्ट में एक डिफरेंस होता है कि आप टपल्स का जो वैल्यूज़ हैं
वो कभी अपडेट नहीं कर सकते हो. Once a tuple is created, it is permanent, it is immutable. So find the incorrect option. कौन सा incorrect हो सकता है? Print t of 1. So these are the positions. अगर मैंने t of 1 लिखा तो print हो जाएगा 12. अगर मैंने maximum of t लिखा तो print हो जाएगा 43. अगर मैंने length of t लिखा तो print हो जाएगा 4. But if I start to allot t at 2, मैंने अपडेट करने का ट्राई किया to -29. This will not happen because tuples are permanent. They are immutable. They cannot be changed once they are created. So B is the right answer. What will be the result of the following code? So D1 एक डिक्शनरी बनाई जा रही है जहाँ पर ABC is the key, उसकी वैल्यू 5 है, DEF is the key and उसकी वैल्यू 6 है, GHI is another key and उसकी वैल्यू 7 है. So D1 at key ABC. So if you notice, अगर हमें D1 at ABC लिखना है तो it should come out as 5. Only if we use inverted commas. But यहाँ पर जो आपका inverted commas है वो missing है तो आपको error आ जाएगा. So D is the correct answer. Suppose list L is declared as, so let's write it down. L is equal to 5 into I. So जो भी वैल्यू I की होने वाली है आप उसको 5 से मल्टीप्लाई करके लिस्ट में ऐड करोगे. फॉर I in range 0 to 4. I know it looks complicated because आपने पाइथोनिक वे में सिर्फ एक ही लाइन में कोड लिख दिया है. But if you want to simplify this code, it should look like this. For I in range 0 to 4, 5 into I. ये कुछ ऐसा लगता है एंड जो भी वैल्यूज आएंगी वो आपके L में ऐड हो जाएंगे. सो दिस शुड लुक लाइक दिस. सो यूजिंग द रेंज फंक्शन आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी? आपके पास वैल्यूज आने वाली हैं 0, 1, 2 and 3. And then for each of these values you have to multiply them with 5. So what should the correct answer be then? It should be C. Identify declaration of M. यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है M एक वेरिएबल एंड मल्टीपल एलिमेंट्स मल्टीपल वैल्यूज दिए हैं सेपरेटेड बाय कॉमा. व्हेनेवर यू सी दिस, जहाँ पर भी कॉमा से सेपरेट हुआ है बट आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं दिए हैं बिकॉज दिस इज अ लिस्ट. अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं दिए हैं देन इट इज ऑटोमेटिकली अ पैरेंथेसिस एंड पैरेंथेसिस से क्या बनता है? टपल. str is equal to RGB color, colors is equal to list str. How do we delete B in the given list of colors? So let's see what's happening in this code. So this is line 1, this is line 2. line 1 में हम लोग एक string define कर रहे हैं, हम लोग एक variable define कर रहे हैं str, ठीक है, जिसकी वैल्यू है RGB COLOR. ठीक है, हमारे पास ये टेक्स्ट है जो str में स्टोर हो गया. What is the second line? Second line tells us that another variable colors is created, जिसकी जो वैल्यू है that is actually the list of str, but list of str should look like RGBCOLOR. Please take the inverted commas everywhere and it's your list. अभी हमें यहाँ पर B को डिलीट करना है. हाउ डू वी डू दैट? अ कपल ऑफ ऑप्शंस आर देयर. DEL colors at 2, 0, 1, 2, 3. सो अगर B की पोजीशन 2 है, आपको सेकेंड पोजीशन का एलिमेंट डिलीट करना है तो यू कैन यूज दिस कोड. यू कैन ऑल्सो रिमूव by using the name of the element directly by using the list name dot remove. You can also use list name dot pop. Pop at what position आपने दे दिया है वहां पर. So all of these should be the right answer. D name.
Now we have another question जहाँ पर जो day name variable है, it has a list of strings जहाँ पर आपने Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday store किया. So let's see what is the next line. Next line says that print day name at 7th position पे print करना है. So let's see. 4 5 6 0 से स्टार्ट होगा हमेशा, बट यहाँ पर आपका 7th एलिमेंट तो है ही नहीं, तो फिर आपको एरर मिल जाएगा. So what kind of a logic gate is this? So try to remember, जब straight line वाला आपको गेट दिखे, so this is an AND gate. अगर आपको curved line वाला मिले तो this is an OR gate. ठीक है, अगर इसके पीछे आपने लाइंस लगा दी हैं तो that becomes exclusive and an exclusive OR gate. So this is an exclusive OR gate. Which is the equivalent of a plus b? So a plus b का inversion करना है हमको, और it can also be represented as a plus b this. So जब हम लोग invert करते हैं तो हर चीज़ अंदर invert हो जाती है, including the sign. So it should look like a inverted plus, या फिर और को भी invert किया and b inverted. So a inverted plus को अगर invert करते हैं तो क्या बनता है? It becomes and. So a naught into b naught. So a would be the right answer. Which is not a threat? Worm, Trojan, virus or email? So obviously email, no need to explain here. बाकी सारे बहुत खतरनाक elements होते हैं जो आपको PC के slow कर सकते हैं. What type of damages can be caused by viruses to your computer? Damage और delete files, yes हो सकता है. PC slow हो जाता है, आपके जो प्रोग्राम्स हैं उनकी प्राइवेसी खत्म हो जाती है, उसके अंदर आपका वायरस आ सकता है. सो ऑल ऑफ दीज वुड बी द राइट आंसर. व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट? सो देयर आर टू क्वेश्चंस हियर, हम लोग दोनों ही सॉल्व कर देंगे. सो फर्स्ट वन टेल्स अस, in exam if you see this question, it might happen that you get scared at first or maybe confused or nervous. There is a way to solve these questions. The first thing that you need to see is read the question properly. What is the result of this statement? आप देख रहे हो लॉजिकल स्टेटमेंट लग रही है आपको, तो ट्रू एंड फॉल्स में आंसर आना चाहिए, नंबर में नहीं आ सकता. सो यू कैन एलिमिनेट दिस. Next thing what you try to do is you try to simplify this. So 10 greater than 5, 7 greater than 12 and 18 greater than 3. आप इन सब को, सारे एक्सप्रेशंस को कोई ना कोई वेरिएबल दे सकते हो. ठीक है, तो लेट्स सी. योर एक्सप्रेशन बिकम्स a and b प्लस not c. okay, so this is our expression, our final expression. जैसे ही आप ये एक्सप्रेशन क्रिएट करते हो आपका जो क्वेश्चन है बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है. सो ऑलवेज ट्राई टू simplify it into this expression. Now what we need to do is we need to find the values. हमें values find out करनी है, so वो कैसे कर सकते हैं? So 10 is greater than 5, that is true, so a becomes true. 7 is greater than 12, that is false. 18 is greater than 3, that is true, so c becomes true. So आपका फाइनल एक्सप्रेशन क्या है? ट्रू इंटू फॉल्स प्लस ट्रू का ऑपोजिट और इन्वर्जन. देन यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट दिस इनटू बाइनरी फॉर्म. सो ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0, 1 का इन्वर्जन दैट गिव्स अस, ये बन गया आपका 0 एंड ये भी बन गया आपका 0. So 0 plus 0 is 0 and 0 stands for false. So C is the correct option. I have taken a lot of steps. If you are very comfortable with these kind of questions, आप यहीं से solve करना start कर सकते हो. What will be the output of the following Python code? 6 into 3 plus 4 raised to 2 divided by 5
minus 8. All right. So let's see सबसे ज़्यादा preference किसको मिलेगा. It should look like this. Then your division, इसको floor division बोला जाता है. Then your multiplication, addition and subtraction. So let's try to solve this. Four raised to 2 is 16. So 18 plus. Now floor division अगर हम लोग कर रहे हैं तो it should be 3 minus 8. This should be 13. So over here I have directly calculated 18 because I know कि ये जो थोड़ा part है वो थोड़ा separated है. Always give preference to exponents first and then division. How many times will the following for loops execute and what's the output of this program? Initially you have to read the question very carefully. You have to see कि कौन कौन से for loops हैं. So for I in range -1 to -7 जिसका step है -2. So let's try to create what this range function is giving us. It's giving us -1. -1 के बाद क्या चीज़ आनी चाहिए, इसमें -2 का स्टेप है. सो -2 -3 बैकवर्ड जाना है 2. सो -3 देन अगेन 2 steps back -4 and -5 then again next -6 and -7 बट हम लोग यहाँ पर -7 नहीं लिख सकते बिकॉज आपका जो एंड पॉइंट है दैट इज नेवर कवर्ड, उससे हम लोग एक पहले ही खत्म कर देते हैं. सो दिस इज योर range function, what the range function gives us. For j in range 3 का मतलब है 0 1 2. You have to automatically assume it starts with 0. So for each of these values you will be printing 0 1 2. So your output should look like this. -1 के साथ 0, -1 के साथ 1, -1 के साथ 2. That is the first one. In the next line you go -3 0, -3 1, -3 2. In the next line you go -5 0. Right? How many times the code has been executed? 3 into 3. इसकी लाइन 3 है, इसकी लाइन 3 है. 3 into 3, that is 9 times. Or what is the output of the following program? We have a dictionary with us. So if apple in fruits, what is this statement doing? It is checking कि apple का जो key है that is present in fruits. Is it present? Yes, it is present. Then you need to actually delete that. So next question is rewrite the following code in Python after removing all syntax errors. So इस प्रोग्राम में आपको जितने भी syntax errors मिल रहे हैं आपको delete करने हैं. So first line, all right. So this is a very weird line. आपने value पहले दे दिया and variable बाद में. Variable name cannot be a number. So this should be to should be equal to 30. Next up is for k, capital K is okay. In range 0 to to. That is good. If यहाँ पर if का जो I है that is capital, it should be small f. Else का जो E है वो भी capital है, it should be small e. यहाँ पर जो print वाले हैं it should be small p. So these are the 4 errors, 1 2 3 and 4. What is syntax error? हम लोगों ने just देखा कि syntax errors क्या होते हैं. They're actually the wrong way of writing the code. If I say 10 is equal to x, that is wrong. It will give you a syntax error. If I say 10 colon equals x, that is also a wrong code. That will be a syntax error. What is the difference between equal to and double equal to? So equal to is an assignment operator. जैसे आप यूज करते हो आप वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन कर सकते हो. बट when you use double equal to, you're actually comparing something like if 3 equal to 4, then print whatever you want to print. So इसका जो वैल्यू वो आएगा false. It is a comparison operator.
What do you understand by precedence of operators? What is the precedence of arithmetic operators? हम लोगों ने देखा था सबसे पहले आपको exponents को solve करना पड़ता, then division, something like bod mass या d mass. Similar fashion में आपकी जो precedence है arithmetic operators की वो same रहती है. So with this we have solved a couple of questions जो आपके half yearlies में आ सकते हैं. I hope you were able to solve most of these. If not, अगर आपको किसी question में doubt है, I would suggest you to practice more on that topic. The more you practice, the better your chances are to score well. So please do not forget to subscribe to the channel. I'll be seeing you in the next one. Till then, stay awesome. Bye bye.